ओके, जैसे मैंने पहले बोला था आज हम अफ़गानिस्तान करेंगे क्योंकि पिछली बार मैंने इस कंट्री को छोड़ दिया था एंड ऑन 20th सेंचुरी वेस्ट एशिया करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं तो अफ़गानिस्तान का आपके पास ये मैप है। यहाँ आपके पास पॉलिटिकल मैप है। आप यहाँ अफ़गानिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ देख सकते हैं और अफ़गानिस्तान के रीजन्स। अगर आप इस साइड पे जाएंगे तो आपको यहाँ उसका फिजिकल मैप दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में हिंदू कुश माउंटेन रेंज है और पैरोपेमिसस माउंटेन रेंज है। ये दो मेन माउंटेन रेंजेस है और दो रिवर्स है, एक हरी रिवर और एक हेमंत रिवर। और तो ये आपको याद रखना होगा। इस बार मैं ज्योग्राफी के लिए मैंने बस आप लोग को मैप दिया है, तो आप इससे आप देख सकते हैं कि नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस और डेजर्ट्स कौन से हैं। तो आप लोग को ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट, अब हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान। जो बिफोर क्राइस्ट वाला हिस्ट्री है वो मैं बस आप लोग को समझाने के लिए रखा है। अगर आप लोग को और इसमें जाके पढ़ना तो आप लोग पढ़ सकते हैं। 330 BC में अलेक्जेंडर द ग्रेट अफगानिस्तान को कॉन्कर किया ऑन द वे टू इंडिया एंड ही फाउंडेड द सिटी ऑफ कंदाहार which was initially named Alexandria. Then 642 AD, the Arab conquered Afghanistan and they introduced Islam. And the eastern part of the region remained a number of independent tribes. 998 में Muhammad of Ghazni rises to power and he expands the Ghaznavid Empire to include all of Afghanistan and much of the surrounding region. आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मोहम्मद गजनी इंडिया में 17 बार आया एंड इवेंचुअली इंडिया में उसने भी आगे और अपना राज फैलाया और फिर हमारे पास स्लेव डायनेस्टी आई। फिर 1040 में गजनविड्स were defeated by the Seljuk Turks at the Battle of Dandakan. 1148 में Ghaznavid dynasty is finally defeated by the Ghurids. 1219 में Genghis Khan leads the Mongols and he has an invasion in Afghanistan and a lot of cities are sacked and destroyed. The Mongols led by Genghis Khan all over Asia and हर जगह उन लोगों ने सिर्फ तबाही मचा रखी है। जब भी मंगोल इन्वेजन जहाँ भी हुआ है वहाँ मोस्टली सारे सिटीज को बर्बाद किया गया है, ज़्यादा उससे निकला नहीं है। Then 1370 में अफगानिस्तान becomes part of the Tamilian Mongol Empire and Herat becomes a major city of the empire and Tamilian rebuilds much of what Genghis Khan destroyed. In 1504, Babur conquers Kabul and he will later form the Mughal Empire, which will control the land from Afghanistan to southern India. 1747, Ahmad Shah Durrani establishes the Durrani Empire, and this is considered the founding of the modern state of Afghanistan. And he is often called the founding father of Afghanistan. In 1776, the capital city is moved from Kandahar to Kabul. In 1809, a treaty is signed with the United Kingdom. This is इसे बोला जाता है the first unfair treaty by the Britishers on the Afghans. In 1826 में Dost Muhammad Khan declares himself the Emir of Afghanistan. In 1839, war breaks out between Afghanistan and the British East India Company, and it is the first Anglo-Afghan war.
नाउ अफगानिस्तान और ब्रिटिश के बीच में 3 वॉर्स हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंग्लो अफगान वॉर्स। आप लोग को इनका डेट्स याद होना चाहिए, वो कितना लंबा चले वो याद होना चाहिए, और उनका मतलब एकदम बेसिक लैंग्वेज में उनका आफ्टरमाथ क्या था। 1842, the British are forced to withdraw when the army is nearly destroyed. 1879, after another war with the Britain, the British retake control of much of the territory of Afghanistan. This is the Second Anglo-Afghan War. 1893, the border between Afghanistan and Pakistan is agreed to as the Durand Line. 1919, Afghanistan declares itself as an independent nation from Britain. उनको आज़ादी मिल जाती है, and this is the third Anglo-Afghan War. 1933 में मोहम्मद जहीर शाह अपने आप को राजा का पोजीशन दे देता है, and 1953 में प्राइम मिनिस्टर दाऊद introduces reforms for women. And in 1963, Daud has to resign. In 1964, a constitution and legislature is introduced. प्राइम मिनिस्टर दाऊद को मैंने यहाँ इसके लिए रखा है क्योंकि जब 1973 में कूप हुआ था तो दाऊद was the one, the ex प्राइम मिनिस्टर दाऊद, जिसने वो कूप में शामिल थे और लीड कर रहे थे. And in 1973, Dawood leads a coup and reclaims power, and he declares a republic, overthrowing the monarchy. In 1978, the Soviet-backed communists assassinate Dawood, and a civil war begins. And Hafizullah Amin becomes the president, and this is called the Soviet-Afghan War. ये भी along with the 3 Anglo-Afghan wars, आप लोग इसके अंदर उनका वॉर किसके बीच में हुआ, वॉर कितना लंबा चला, वॉर जब खत्म हुआ, अगर कोई ट्रीटी साइंड हुई कि नहीं हुई, अगर ट्रीटी साइंड हुई तो उन ट्रीटीज का नाम और वो कहाँ साइन हुई, लाइक द प्लेस, उनका आप लोग लिस्ट बना दीजिए. 1979 में द सोवियत यूनियन invades Afghanistan in support of the communist government and they have President Amin killed. Next, 1988 में we have a peace treaty signed with the Soviet Union. In 1989, the last of the Soviet Union troops leave the country. A civil war breaks out in Afghanistan between the communist government and the Mujahideen. In 1992, the communist government falls, but the civil war continues as various factions of the Mujahideen struggle for power. In 1996, the Islamic fundamentalist group called as the Taliban take over Kabul and they introduce Islamic law. And mostly West Asia में there was an जैसे यूरोप में हमने देखा था कि जैसे रशिया में और चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशंस टुक प्लेस, तो वेस्ट एशिया में इस्लामिक रेवोल्यूशन टुक प्लेस. लाइक उधर के जो कंट्रीज थे वो लोग का जब भी कॉन्स्टिट्यूशन था, रादर देन कॉन्स्टिट्यूशन, उनको अपने कुरान से दे वांटेड टू रूल द कंट्री, द प्लेस, द पीपल इन पावर. तो इन अ लॉट ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइम्स पे इस्लामिक रेवोल्यूशंस आए हैं. सो तालिबान वाज part of the Islamic Revolution, and they introduced Islamic law which bans women from work, and violators are stoned to death. In 1996, the Northern Alliance is formed in opposition to the Taliban. In 2001, around 3,000 people are killed in the 9/11 terrorist attacks in the United Nations, and the attacks are led by the group Al-Qaeda, who had their headquarters in Afghanistan. So President George Bush demands the Taliban to turn over the Al-Qaeda leader and to shut down the terrorist camps. And when the Taliban refuse,
So the United Nations and the United States. United Nations more had a diplomatic war with Afghanistan, but it was mostly the United States of America जिन्होंने अपना troops अफगानिस्तान में भेजा and 20 year long war began. अभी आप लोग ने देखा होगा न्यूज़ में that the Taliban have once again taken over Kabul. सो 2001 से 2021 में जब अमेरिका ने अपने ट्रूप्स विड्रॉ किए, फिर तालिबान केम ओवर एंड दे टुक ओवर काबुल वंस अगेन. 2004 Hamid Karzai selected president. 2011 Osama bin Laden, the leader of the terrorist group Al Qaeda, is captured and killed. And in 2021, after a 20-year-long war against the Taliban wins and they take over Kabul. Now, Afghanistan is referred to as graveyard of empires. तो ये आप लोग को पूछा जा सकता है कि अफगानिस्तान को क्या बोलते हैं. अगर आपको रीजन चाहिए why Afghanistan is called the graveyard of empires is because अगर आप देखेंगे तो सोवियत यूनियन आके गया, वेस्टर्न पावर्स जैसे ईस्ट इंडिया ब्रिटेन आके गया, तो अफगानिस्तान कभी इंडिया की तरफ फुली कॉलोनाइज नहीं हुआ था, और उसकी वजह से पूरा 20th सेंचुरी से लेकर अब तक इट्स जस्ट उधर लगभग सिर्फ लड़ाई चले जा रहे हैं, और अभी भी वही हो रहा है. मूविंग ऑन. So 20th century of West Asia. So ये आपका वर्ल्ड वॉर 1-2 से रिलेटेड है, एंड इन द आफ्टरमैथ जब बहुत सारे इस्लामिक रेवोल्यूशंस, कूप्स एंड वॉर्स चल रहे थे, सो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैंने बहुत कोशिश की है थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के लिए. सो बेसिक क्रोनोलॉजी मैंने कंट्री वाइज डिवाइड किया है, इराक, ईरान एंड सऊदी. अफगानिस्तान का तो मैंने आप लोग को ऊपर ही बता दिया था कि क्या हुआ था. सो इराक वॉज पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर. अगर आपको याद होगा तो वर्ल्ड वॉर 1 में एलाइड Ottoman Empire was against the Allied powers, which was France, Britain, etc. So 1914, World War I begins. The Ottomans are allied with the Central Powers of Germany and Austria. In 1917, British troops invade Iraq and take control of Baghdad. In 1919, World War I ends and the Ottomans lose the war. In 1920, Iraq becomes a British mandate and they appoint Faisal I as King of Iraq. In 1927, oil is discovered north of Kirkuk. In 1932, Iraq gains its independence from Britain. And in 1939, with World War II, Iraq is allies with the Axis powers. Axis powers are Germany and Italy and Japan. आप लोग को ये याद रखना होगा, द वर्ल्ड वॉर 1 के डेट्स आपको याद रखने होंगे, और एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स कौन थे, और वर्ल्ड वॉर 2 में एलाइड पावर्स और एक्सेस पावर्स में कौन थे, और ये वॉर्स कितने लंबे चले. और जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के एंड में ट्रीटी ऑफ वर्साई था, वैसे उन सबको आपको याद रखना होगा. ये मैंने पिछली क्लास में जब यूरोप हम कर रहे थे उसमें मैंने समझा दिया था. 1945, Iraq joins the Arab League. 1948, Iraq attacks Israel along with the Arab League in the Arab-Israeli War. Again, जहाँ भी में कोई भी वॉर होता है, जैसे इधर अरब इजरायली वॉर है, तो आप लोग को जाके सर्च करना है कि ये वॉर कब हुआ, किन के बीच में हुआ, और अगर अगर कोई जीता तो कौन जीता, और अगर कोई ट्रीटी साइन हुई तो किन के बीच में हुई और उस ट्रीटी का नाम क्या था. 1958, the monarchy in Iraq is overthrown and the Republic of Iraq is founded. In 1968, the Ba'athist Party takes control of Iraq.
In 1972, Iraq nationalizes. Nationalizes means the government के पास control है of Iraq Petroleum Company, and the statue of Saddam is torn down. In 1979, Saddam Hussein becomes the president of Iraq and he eliminates opposition and becomes a dictator. In 1980, the Iran-Iraq War begins. Again, Iran-Iraq War is also very important in the history of West Asia, तो आप लोग को इसके बारे में और पढ़ना चाहिए. 1981, an Iraqi nuclear research center is bombed in Israel. Thus, 1988 में finally a ceasefire is agreed with Iran for the Iran-Iraq War. 1988, Iraq uses chemical weapons to kill thousands of Kurdish people in the city of Halabja. 1990, Iraq invades Kuwait. In 91, आपका Persian Gulf War, also known as the First Gulf War, begins as a coalition of countries attack Iraq to free Kuwait. The mission is called Operation Desert Storm, and Iraq is defeated and forced out of Kuwait. Now, इधर मैंने जो भी आपको बोला था कि इराक में ये न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर या आपको केमिकल वेपन्स, ये बस बैकग्राउंड है आपका पर्शियन गल्फ वॉर के लिए कि पर्शियन गल्फ वॉर क्यों हुआ, और आप लोग ये भी देख लीजिए कि कोएलिशन कंट्रीज में कौन कौन आए थे. 1992, southern Iraq is declared a no-fly zone. This is after Persian Gulf War के बाद इराक में जो impositions लगाए गए. 2003, coalition of countries. Coalition माने group of countries, including America and UK, invade Iraq for UN violations and weapons of mass destruction. They take Baghdad and capture Saddam Hussein. This is known as the Iraq War or the Second Gulf War. This is again maybe बहुत important है. Then 2006 में Saddam Hussein is executed for war crimes. 2010 में a new Iraqi government is approved by the parliament, and in 2011 US troops officially leave Iraq. ये आपका इराक हो गया. Next comes Iran. Now, Iran में खजार डायनेस्टी के बाद क्या क्या हुआ उधर. So 1813 में the Russians defeat the Persians in the Russo-Persian War. In 1905, the Persian constitutional revolution begins and the parliamentary government is formed, and the parliament is called the Majlis. In 1908, oil is discovered. In 1914, World War I begins. Iran remains neutral, but it is occupied by various forces, including Britain, Russia, and the Ottoman Empire. मतलब ब्रिटेन एंड रशिया तो allied forces थे और Ottoman central force था. So Iran sort of became a war zone. 1919 में जब World War I खत्म हुआ, so Britain tried to take over Iran like they did in Iraq. But in Iraq they were successful, but Iran पे British कब्जा नहीं कर पाए. The Tehran Conference in 1921, Reza Khan captures Tehran and seizes power, and he is made prime minister in 1923 and the Shah of Iran in 1925. And he brings modernization to Iran, and he is not liked by the Muslims. So Reza Khan was not part of like the Islamic Revolution जो हुआ था West Asia में. 1935, the official name of the country is changed to Iran from Persia. 1939, World War II begins. Iran again remains neutral, but this time it is friendly to the Axis powers. Axis powers आपका Russia, Italy और Japan. 1941, Soviet and
British invade Iran in order to pursue the oil supply for the Allies. Because इधर ऊपर दिया है ईरान एक्सेस पावर्स के साथ था, तो the forcibly allied powers came to Iran for oil. Most of the conflicts वेस्ट एशिया में ऑयल के ऊपर है. अगर आप देखो तो जब भी कोई वेस्टर्न कंट्री इंटरफेयर कर रही है, मोस्टली अमेरिका है, सोवियत यूनियन है, यूके है, उनको ऑयल चाहिए ना. ऑयल बहुत इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक इन द इकोनॉमिक वर्ल्ड. तो उसके वजह से वेस्ट एशियन कंट्रीज बहुत अमीर है. 1941 a new Shah, Muhammad Reza Pahlavi, is put in power. 1951 the Iranian parliament nationalizes the oil industry. In 1979 the Shah आपका Iranian Revolution आता है. The Shah is forced into exile and Islamic leader Ayatollah Khomeini takes over, and the Islamic Republic of Iran is declared. Now this is the Islamic Revolution. 1979 में अगेन आपका ईरान हॉस्टेज क्राइसिस होता है, जिसमें 52 अमेरिकन्स आपके रेवोल्यूशनरीज से के जो है उन्हें हॉस्टेज रखते हैं फ्रॉम द यूएस एम्बेसी इन तेहरान. So in the Shah dies of cancer and the hostages return home. The Iran-Iraq war begins. In 1981 they return home. This is wrong. In 1981, the hostages taken in 1979, they return after a sum total of 444 days. In 1988, again, a ceasefire is agreed with Iraq, and in 2002, Iran begins construction on its first nuclear reactor. Now, अभी अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे या यूएन प्रोसीडिंग्स का न्यूज़ सुनेंगे तो they are against Iran having nuclear weapons. So they are putting sanctions on Iran. जब sanctions UN जब sanctions डालता है, basically they have the Iran has to pay a lot of money for having nuclear weapons. Lastly आपका आता है सऊदी अरेबिया. So सऊदी अरेबिया में अगर आप लोग को याद होगा तो हाउस ऑफ सऊद has been in power for the longest time और अभी भी है. So 1902 में इब्न सौद takes control of Riyadh. 1912 में the Ikhwan, the Brotherhood, is founded based on strict Wahhabi Sunni Islam and provides support to Ibn Saud. Between 1921 and 25, collapse of Ottoman Empire takes place, and Ibn Saud takes over Najd and Hijaz, the home of the Muslim holy cities of Mecca and Medina. 1928 to 30 के बीच में Ibn Saud defeats an Ikhwan uprising against his efforts to modernize the region. Finally, Saudi Arabia is formed. In 1932, in September, Ibn Saud unites his land as the Kingdom of Saudi Arabia and places the king Abdulaziz. In 1938, again, oil is discovered and production begins under the US-controlled Aramco, Arabian American Oil Company. 1960, Saudi Arabia is the founding member of OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. 1973, Saudi Arabia leads an oil boycott against the Western countries that support Israel in October. The Yom Kippur War with Egypt and Syria. Oil prices quadruple. Now, अगर आपको और समझना है इजराइल और पैलेस्टीनियन इशू पे, so the Muslim countries of West Asia, they
on basis of the Islamic Revolution, they are in support of Palestine and they are against Israel. जितना अब तक मुझे समझ में आया है, मैं खैर आप लोग को इसराइल पैलेस्टाइन के इशू पे ज़्यादा नहीं जाना है, पर most of the Muslim countries of West Asia, they support Palestine. 1980, Saudi Arabia takes full control of Aramco from the US. Aramco again, Arabian American oil company. 1990, Saudi Arabia condemns Iraq's invasion of Kuwait and asks the US to intervene. Then Saudi attacks Iraq. 1991, Saudi Arabia is involved in both air attacks on Iraq and the land forces that went on to liberate Kuwait. 1994, Islamic descendant Osama bin Laden is stripped of his Saudi nationality. 2008, finally Saudi Arabia and Qatar have like a final agreement on their border. And 2011, King Abdullah announces increased welfare spending as Arab Spring unrest continues in the region. Now, what is Arab Spring? Now, Arab Spring was like early 2010s में there was बहुत सारे anti government protests, uprisings और armed rebellions भी हो रहे थे Arab world में, which was influenced by the Tunisian revolution. So Tunisia से वो protest लगभग 5 और देश में गए, लिबिया, इजिप्ट, यमन, सीरिया एंड बहरीन. भले प्रोटेस्ट और अपराइजिंग इन 5 या अभी टूनिसिया को पकड़ लो तो 6 कंट्रीज में ही थे, बट इट अफेक्टेड द एंटायर पॉलिटिकल सेटिंग ऑफ वेस्ट एशिया. ठीक है, तो आज के लिए तो बस इतना ही है. अफगानिस्तान करना था और जो भी मेसी 20th सेंचुरी था वेस्ट एशिया का वो करना था. अगर आप लोग के पास कोई डाउट्स है तो पूछ लीजिए. स्वाति यू कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग. मेरा प्रेजेंटेशन हो गया है. हेलो. Let it be. I'll stop it. अच्छा, आप लोग के पास और कोई क्वेश्चंस या कुछ होंगे? कल आप लोग की लास्ट क्लास है, तो बेसिकली मैं आप लोग का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे लीग ऑफ नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, जो भी यूरोप के और वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के ऑर्गेनाइजेशंस है, उनका लिस्ट मैं आप लोग को दे दूँगी, या थोड़ा उनका हिस्ट्री जो बताना है, फाउंडिंग मेंबर्स उन सब का, वो आप लोग को कल तक मिल जाएगा. अगर आप लोग को और कुछ जानना है तो आप भी बोल दो. कोई डाउट्स पूछना है तो जल्दी से पूछ लीजिए. हाँ बोलिए. हेलो. हाँ, आपका आवाज आ रहा है. हाँ मैम, अफगानिस्तान में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? अफगानिस्तान में? हाँ. अफगानिस्तान में बेसिकली जो मैंने एक तो उसका ज्योग्राफी कर लीजिए. अफगानिस्तान का नेबरिंग कंट्रीज क्या है, अफगानिस्तान में मेजर रिवर्स, माउंटेन्स क्या है, और अगर जो भी उसका बॉर्डर है तो उन बॉर्डर्स का नाम. एक तो वो. सेकंड, जो मेजर वॉर्स है, जैसे अफगानिस्तान में 3 एंग्लो अफगान वॉर्स हुए हैं, तो उनके डेट्स, और तालिबान पे क्या चल रहा है वो, और बेसिकली लैंग्वेज, उनका फ्लैग का कलर्स, और उनके फ्लैग में जो भी कुछ अगर सिंबल होगा तो उसका क्या मतलब होता है. लैंग्वेज, एथनिसिटी, अगर अफगानिस्तान में कुछ भी ऐसा मॉन्यूमेंट्स या यूनेस्को साइट से वो सब करना है. उसका वेस्ट एशिया का हिस्ट्री थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैंने
अपना मिड वेस्ट एशिया का जो पढ़ाने का था वो बस हिस्ट्री थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है, ताकि आप लोग के लिए ज़्यादा ईज़ी हो जाए समझने के लिए। अगर और कोई डाउट है तो पूछिए, मुझे आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि एग्ज़ाम भी आ रहा है। आई एम श्योर आप लोग को अपने आप से भी खुद पढ़ना होगा। तो अगर और किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम बंद कर देते हैं।